So yes, all can hear me. We were doing the questions yesterday and we also talked about the resultant of the two vectors. So before we move ahead and before everyone joins, any doubt any one of you is having, let me know that. So if no doubt, then we shall move ahead. So we have already talked about the main types related to the resolution of vectors and the combination of vectors. So today we are going to do the questions based on dot and the cross product. So related to the dot and cross product, we have already gone through the main formulas. Dot product of two vectors was AB cos theta. So there was yet another way. So for example, A vector was 2i cap plus 3j cap and B vector was minus 2i cap plus 2k cap. Then in this case, A dot B was given by the multiplication of the coefficients of the unit vectors together. So like 2 and minus 2 were multiplied together, and then 3 and here no coefficient of j, that means 0, and then plus 0 k cap 0 into 2. So this result came out to be 4. So there were two ways to find out the dot product. One is using this way and another is using this way. Well, we also talked about the cross product. And to be remembered, cross product of two vectors is a vector. So given by AB sine theta, this is just the magnitude. Because we know the cross product results into a vector quantity which has magnitude and the direction. So direction is given by, let's say, n cap. And how do we determine this n cap? It is by the usage of right hand thumb rule. Talking about another way to get the value of the cross product, we had that using the determinant. So these all things we have already gone through in the last class. We will do some questions based on the vectors. So before we move ahead, any question, any one of you having related to the cross and dot, let me know that first. Else I'll just put the questions. So only two sections we have remaining in the vector. Third one is the application of vectors. So today we should finish these two sections, the dot and the cross product. No doubt. N cap, Sampata, that is the direction of A cross B. So let us understand the direction of the cross product here. Everyone should watch this video. I'll explain here. So let us say these are the two vectors, है ना? ये B vector है और ये A vector है. Let us see how to get the direction. So as you can see, these two vectors are lying, A vector and B vector are lying on the plane of computer screen, right? They are lying on the plane of computer screen.
So let us see how can we find out the direction of A cross B. So first, if we want to find A cross B, so take your right hand and start curling your fingers such that you are able to make a thumbs up and take the direction by curling the fingers right from A vector, right? Because you are finding A cross B. You can see how the fingers are there. The thumb is pointing vertically downwards into the screen, right? It should not be like this. It should be the opposite way because we are finding A cross B, right? You should curl your fingers like this. So when you curl it like this, you will see that the thumb points into the screen like this. You can see you are able to curl, and the curl should be proper. So when you will be curling these four fingers, when you will be curling in clockwise direction, because we need A cross B, then the thumb will point into the screen. Remember, thumb should be placed perpendicular to these four fingers, right? So C vector, which is the resultant of A cross B, that is pointing into the screen. Is this direction clear? Then tell me what will be the direction of B cross A. Direction of B cross A. Opposite. That means, can I say it will be out of the screen? B cross A will be out of the screen. You have to say that this direction is perpendicular to, either we find A cross B or B cross A, that is perpendicular to the screen or the plane containing A and B vector, right? Because whenever you will be curling the fingers, the thumb will be perpendicular to the curled fingers, right? So this is clear. So any one of you has any doubt related to the direction? No doubt. Then let us conclude here. I'll write here. So the direction of A cross B, it is given by n cap. And how do we get n cap? By right hand thumb rule, and we can say n cap is perpendicular to the plane containing A and B vector, right? Okay, so no doubts. You have to ask me if you have doubts. So let us do the questions based on the dot product and the cross product. Okay, so let us do this question quickly. Find the angle between the vectors A and B if A vector is I minus 2j plus k and B vector is 2i minus 2j plus 2k cap. Everyone will tell me their answers through the chat.
जिनका हो जाएगा दे विल लेट मी नो। नो आंसर आई हैव रिसीव टिल नाउ। सभी कोई करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कैसे निकालेंगे एंगल? यूज द डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट यूज करो या क्रॉस यूज करो, वॉट एवर इज इजी। सो ऑफकोर्स डॉट इज इजी। तो डॉट में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी हमें पता है इट इज ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए डॉट बी का वैल्यू पता है तो ए एंड बी क्या है, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यू कैन फाइंड देम। तो ये भी कैसे निकलता है, वी कैन मल्टीप्लाई देयर कोएफिशिएंट्स टुगेदर। तो 1 इंटू टू हो जाएगा 2, -2 इंटू -2 हो जाएगा 4, एंड देन 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, just take this root of 1 square plus 2 square plus 1 square. Magnitude of b, that will be root of 2 square plus 2 square plus 2 square and cos theta. So क्या इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं? Yes, we can find it. So our answer will be 8 by root, this will be 6 and this will be 12 is equal to cos theta. So हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? So root 6 and root 12, I can write root 12 as root 6 into root 2. So we get cos theta as 8 by root 6 into root 6 into root 2. So we get cos theta as 8 by 6 root 2. So that comes out to be cos inverse 4 by 3 root 2. Cos inverse 4 by 3 root 2. Is this clear how we found out the angle? Renuka, how did you get 90? Let me know, how did you get 90? I think यहाँ पर you have put minus, right? But ये plus होगा because you have to multiply -2 with -2, है ना? So you will get this value for the angle between two vectors.
तो सबको समझ में आया? We have taken magnitude because A is the magnitude, B is the magnitude here. इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा ना, या ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज प्रीटी इजी, सबको समझ में आया, वेरी गुड। चलो ये करेंगे, एवरीवन विल डू एंड लेट मी नो देयर आंसर्स। एंड जिनका हो जाएगा दे विल लेट मी नो थ्रू द पोल। जस्ट प्रेस यस इफ यू हैव डन, इट विल गिव मी आइडिया कितने लोग कर चुके हैं। चलो जल्दी 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 सब करेंगे। जिनको डाउट्स है आस्क मी वेरी फ्रैंकली, क्योंकि ये वेक्टर है जो कि हम हर चैप्टर में यूज करेंगे।
आई कैन सी योर आंसर्स गाइस, बट अभी तक सिर्फ 33% लोग अटेम्प्ट किए हैं। सभी कोई करेंगे। देखो अभी तो किया हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस। बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। बस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है कि कितनों ने कर लिया है, so that when we revise, when we redo this, you should be able to recapitulate them. चलो देखो क्या है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स गिवन बाय, फिर से यही चीज यूज करेंगे, ए डॉट बी। देखो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, बट ये यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा, राइट। और हमें एन कैप का भी वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत आएंगी, दैट्स वाई वी यूज डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी निकालो, एक तरह से कैसे निकलेगा, सारे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो एंड देन टेक देयर मैग्नीट्यूड। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हमें मिल जाएगी, क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट व्हाट आई डिड, आई जस्ट रीअरेंज्ड इट। ओके, दिस इज आवर आंसर। लेट अस डू दिस वन। This time at least 50% of you should do within the time limit given. देखो 2-3 मिनट हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है। More than I am doing here, what is important is to try thinking to do them. चलो करो ये सभी कोई।
This time 35% of you have done. Quickly, last 1 minute. Make it 50-60 guys. सभी कोई attempt करेंगे. चलो, let us see this. Find the length of projection of A on B. ये एक A वेक्टर है और ये एक B वेक्टर है. A वेक्टर दिया हुआ है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, है ना. So first thing is, how do we find projection of A on B? So projection of A on B. So let us say the angle between them is theta. Now, if I project A vector, it will be A cos theta here and A sin theta here. तो जब मैंने A को प्रोजेक्ट किया तो A cos theta was along B vector, or we can say on B vector, right? So what is the projection of A on B? Answer is A cos theta, right? So either you can find cos theta and put with the multiplied form of the magnitude of A, or we can write this as A cos theta into B by B, right? क्योंकि ये तो 1 ही हो गया. And this is equal to A dot B divided by B, right? A B cos theta is A dot B. अब A dot B easily we can find. 1 into 1 हो गया, minus 1 into 1 हो गया, फिर 1 into minus 2 हो गया, and divided by B क्या है? Magnitude of B, that will be root of 1 square plus 1 square minus 2 square. So that will be root 6. So what we get as the result for the projection of A on B? 1 minus 1 cut गया, so minus 2 by root 6 is the answer. Minus 2 by root 6. Is this clear to you all? है ना? Very simple thing. A on B. तो A का हमने देखा, फिर B के साथ प्रोजेक्ट.
all right, so yes, it's okay, my screen is okay. I thought it would need restart. So yes, this question, is it understood how to find the projection of a on b? है ना, हम a का प्रोजेक्शन देख रहे हैं b पे, ऐसे ही अगर रहता फॉर b ऑन a, तो देखो ये b ले लो, ये a ले लो, तो b को प्रोजेक्ट करते तो इधर आता b cos थीटा और इधर आता b sin थीटा, राइट? तो b ऑन a का प्रोजेक्शन क्या होता, b cos थीटा। ओके, दिस इज अंडरस्टूड। चलो, लेट अस डू another question on vectors. Let us do this one. And जिनका हो जाएगा, they will put yes here. ये जल्दी से करेंगे, सभी कोई करेंगे। सभी कोई करेंगे इसको। लेट अस सी व्हाट इट इज। वेरी फ्यू ऑफ देम हैव डन। लेट अस चेक। A vector is given, B vector is given, and in B vector we have one unknown variable lambda. So you have to find that lambda for which A vector plus B vector and A minus B vector are perpendicular. तो पहले A plus B vector देखते हैं क्या होगा। 5i minus j plus 7k plus B vector, that is I minus j plus lambda k cap.
So this comes out to be 6I minus 2j plus 7 plus lambda k cap, right? Now we find A minus B vector. So that will be the same A vector minus I cap minus j cap plus lambda k cap. So this will be 4I cap plus 7 minus lambda k cap. And it is given that these two vectors are perpendicular. That means their dot product will be 0, right? So A plus B डॉट ए माइनस बी, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट देखें तो 0 होगा. वाई? बिकॉज एंगल इज 90 एंड कॉस 90 क्या होता है? 0. So just take the dot product of these two vectors which we have found for a plus b and a minus b. So let's put here. We get 6I minus 2j plus 7 plus lambda k cap into 4I plus 7 minus lambda k cap. So taking the dot, what we do, we multiply the coefficients together. So 24 plus 7 plus lambda into 7 minus lambda is equal to 0. So we get 24 plus 49 minus lambda square is 0, and this gives lambda squared as 73. So what's the value for lambda? It is plus minus root 73, and this is our answer. ये समझ में आया सभी को? राइट, इट्स वेरी सिंपल. मैंने फिर से यहाँ पर एक ही चीज यूज किया, वही डॉट प्रोडक्ट. एंड एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दैट मीन्स वी वर श्योर दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0 एंड हेंस देयर कॉस इज 0 और द डॉट प्रोडक्ट इज 0. So let us now try to prove this one. And ये क्योंकि proof है, you all will try this once again. और ध्यान से इसको करना है. भाई यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत आ रहे हैं तो फिर they have to look at the previous session. अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स टुगेदर. तो -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर जे कैप का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स नॉट इंक्लूडेड हियर. ओके, डू दिस वन.
ये सभी कोई करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग। और जिनका हो जाएगा दे विल प्रेस यस। सो ओनली 30% ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड। सभी कोई करेंगे।
Yes, everyone have done. Let us see how to prove this one. You have here the dot symbol. That means normally if we multiply them, it will be a vector into a minus b plus b vector into a minus b. So this will give us a dot a minus a dot b plus b dot a minus b dot b. So this gets cut. Now a dot a vector, that is the magnitude of a vector square, because angle between them is 0 and cos 0 is 1. वैसे ही क्या होगा, b dot b vector will be the magnitude of b vector whole squared, and this is the result which we need to prove. Okay, that was very simple. Now we will do the questions from the cross product. Kahoot we will play if at last we get time, because at least we have to complete dot and the cross today. तो ये जल्दी जल्दी कर लो, फिर let us see, or else in the next class we will definitely play that as well as clear all your doubts, because today you have to do the homework for dot and cross. So do this one. What it says, find the sine of the angle between the position vectors. So basically you have to find sine of theta if you assume theta as the angle between the position vectors whose coordinates are given by 303 and 1 2 minus 3 minus 7. So if 303 is the coordinate, that means this vector is 3 I cap plus 0 j cap plus 3 k cap. If 1 2 and minus 7 is the coordinate of another point, then that vector is I cap plus 2 j cap minus 7 k cap, right? This we have already seen how to convert the coordinate into position vector. And you have to find sine theta, then definitely we must use the cross. A cross B, we know it is AB sine theta. So how do we find the cross? By taking the determinant and put the values here, 303, and then the coordinates of second vector 1 2 and minus 7, and that is equal to AB sine theta. So quickly find out the value of sine theta. So we have already seen the way to explore this determinant. Multiple times we have seen, so we will just write that answer directly. 0 into minus 7, 0, minus 3 into 2, 6, minus j cap, 3 into minus 7, minus 21, minus 1 into 3, plus k cap, that is 3 into 2, 6, minus 0. And this is equal to AB sine theta. So A is the magnitude of vector A. So it will be root of 3 square plus 0 square plus 3 square. Find out the magnitudes. Magnitude of B will be 1 square plus 2 squared plus minus 7 squared. And here we have sine theta. But how can you find sine theta if you have the values on the right and vector on the left? So definitely we take their magnitude as well. So you get root under 6 square plus 24 square plus 6 squared is equal to root under 3 squared plus 3 squared into root under 1 squared plus 2 squared plus 7 squared. So now from here you can just solve it and get the value of sine theta. अब ये कितनों को समझ में नहीं आया, they will let me know. सबको समझ में आया how we involved the cross product here?
Okay, great. So now you have to do this question, and इसके final answers I will point out randomly. I'll give you 3 minutes to do this. After 3 minutes, I'll point out randomly, and you have to tell me the answer. Right? I make it 4 so that you surely complete it. We can do this quickly. Why is there a root sign on the left hand side in the last step? Because we found the magnitude. This is a vector, right? It involves I cap, j cap, and k cap. So if you remember, a cross b क्या होता है? A b sin theta and n cap. So you just have the magnitude, right? You have just written here magnitude. So you need to take the magnitude of what you find a cross b as. तो ये a cross b निकला, तो उसका magnitude ले लिया हमने. Magnitude क्या होगा? Root of this square plus this square plus this square. Okay, we still have 2 minutes remaining. Everyone will do. I'll point out the name randomly. You have to answer me, or you have to also answer me till what point you have done.
So a force on a moving charged particle in a magnetic field is given by, ये रहा expression force का. So force is Q into V cross B, right? They have given the formula to use. Q is the charge on the particle. V vector is the velocity of the particle. और velocity vector क्या दिया हुआ है? I cap minus 2k cap. And B vector is the magnetic field, whatever it is. We just need to see the vector. तो B vector क्या दिया हुआ है? 4i cap plus 3j cap plus k cap. And a particle with charge 2 units. Charge क्या दिया हुआ है? Q as 2 units. Find the force experienced by it and its magnitude. So you have to find the force vector and its magnitude. So everyone have done. You would have done. So Adnan will tell me till what point you have completed. कहाँ तक complete हुआ? There is no hard and fast and hard rules here where we require a high scientific information to be implied. We just need to use the direct cross product, है ना? ये cross है. Okay, Adnan is doing. चलो keep doing. Let me know once you are done. So Athar will tell me कहाँ तक complete हुआ. जल्दी करना है complete इसको. Are you there, Athar? देखो क्रॉस बस निकालना है. V क्रॉस B. V दिया हुआ है, B दिया है. V क्रॉस B निकालना है डिटर्मिनेंट में. ये क्या होगा? I कैप, J कैप, K कैप. और V का कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पर. तो V का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1, 0 एंड -2. B वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखना है तो क्या होगा? 4, 3 एंड 1. So if you evaluate, you will get I cap into, कैसे करते थे इसको evaluate? जैसे I cap, if it is in first row first column, we multiply elements which are not in first row first column. So we do 0 into 1 minus 3 into -2. फिर माइनस जे कैप के साथ करते थे 1 into 1 -4 into -2, तो +8 हो गया. फिर के कैप के साथ करते थे 3. सो वी गेट 6 आई कैप -9 जे कैप +3 के कैप. ये मिला मुझे V क्रॉस B. सो नाउ फोर्स विल बी Q into V cross B. Q is 2. So 2 into 6i minus 9j plus 3k. So this gives us the final expression of force as 12i minus 18j plus 6k cap. तो क्या ये मिला है सभी को? 12i minus 18j plus 6k cap. या नहीं मिला है? So you would be able to understand now हमने कैसे निकाला. बस हमने डायरेक्टली यूज किया क्रॉस प्रोडक्ट. So question says you to find the force experienced and its magnitude. तो एक बार फोर्स का वेक्टर मिल गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो दिस विल बी रूट 144 प्लस 18 square, that will be 324. So we get here so रूट 414 न्यूटन्स कुछ ऐसे आया है ना. यस यस 324. ये 234 नहीं लिखना, 324.
So let us calculate it. 324 plus 144. So you can easily compute it now. But you have to be aware of the steps that we have used to find the force. क्या किया हमने? बस क्रॉस प्रोडक्ट we have used. Now this is the most basic question. So you should try doing this one. R vector is given, V vector is given. Find R cross V. What does this mean? इसका मतलब तो है R cross V क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट फाइंड करो, बट ऐसे लगा दिया दैट मीन्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड आफ्टर यू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट. And you will notice that, let us suppose I am finding cross between A and B. So you will notice A cross B is not equal to B cross A. In fact, you will notice that A cross B is negative of B cross A. So at the home, after the class, what you can do, you can take any two vectors, find out A cross B, and then find out B cross A. You will find that A cross B is coming out to be negative of B cross A. Right? So this is an important result again, which we have to remember. तो ये करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस सिंबल मीन. तो आर क्रॉस बी इजिली निकल जाएगा, राइट? तो जो निकलेगा वो आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में रहेगा, बिकॉज ये जो डिटर्मिनेंट होते हैं दैट इज गिविंग अस द रिजल्ट इन वेक्टर्स. तो आर क्रॉस वी इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कैसे निकालते हैं? वॉट एवर वेक्टर वी गेट, लेट अस सपोज कि वेक्टर आ गया हमारा आई कैप माइनस टू जे कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? जस्ट स्क्वायर द कोएफिशिएंट्स एंड टेक द रूट, राइट? Okay, so who will tell me how to do this question? And we have an important result to note from here. करना नहीं है, you have to tell me how to do this one. Cross product of two vectors, yes. So yes, we get the area of the parallelogram using the cross product of the two vectors. Right? Remember, if you have a parallelogram, you can find the area by taking the cross product of two vectors representing the sides. So A cross B will be giving you the area of parallelogram. तो वैसे ही अगर area of triangle निकालना है, let us suppose this side is A and this side is B. तो इसका एरिया क्या होगा? ये देखो, ये पैरेललोग्राम का हाफ है, राइट? अगर मैं इसको फॉर्म करूं, सो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. अच्छा, वेक्टर में तो एरिया आएगा नहीं, सो इट्स बेटर टू
take the magnitude of the cross product as the area. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, we will just find out the cross and take the magnitude. So yes, who will do this? Quickly let me know the answer. So this time let me randomly scroll. Yes, Shanti K will tell me the answer. ये देखो ये बहुत simple question है ना. Shanti K will tell me the exact area of the parallelogram. There are derivations, but अभी derivations चलो करते हैं, इसके बाद derivation करते हैं. But mainly we require the formulas. ठीक है, करेंगे डेरिवेशन इसके बाद. बट इसका आंसर शांति के क्विकली टेल मी, बाकी सब भी देंगे. ओके, 4√7. शांति के सेज 4√7. लेट अस सी क्रॉस प्रोडक्ट. चलो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं. आई कैप की जे कैप के कैप. 1 2 3 2 minus 2 4. So this will be I cap 8 plus 6 minus j cap 1 into 4 minus 3 into 2. So that will be 4 minus 6 plus k cap 1 into minus 2 minus 2 into 2. So that will be minus 2 minus 4. So this will be 14 I cap plus 2 j cap minus 6 k cap. So area will be its magnitude. So that will be root 196 plus 2 square, that is 4, plus 6 square, that is 36. So root 236 आ रहा है. रूट 236. अब रूट 236 कितनों को आया? है ना?
अंडरस्टूड दिस वन? मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, बस डायरेक्टली यूज किया फॉर्मूला. सो लेट अस फाइंड. मैं ये प्रूव कर देता हूँ, ये प्रूव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में उसका डबल हो जाएगा. सो लेट अस प्रूव कि एक ट्रायंगल में एरिया जो होता है वो ए क्रॉस बी से हम कैसे निकाल सकते हैं. लेट अस से दिस इज ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी है, एंगल थीटा है. ए को अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हाइट हमें मिल जाएगा, राइट. दिस विल बी ए साइन थीटा, राइट. इधर ए कॉस थीटा होता है, इधर ए साइन थीटा. तो एरिया क्या होगा देखो, हाफ इंटू बेस, बेस है बी, हाइट क्या है ए साइन थीटा. सो what is this ab sin theta? This is a cross b. यहीं से प्रूव हो गया हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे मिलता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, दिस विल बी जस्ट 2 times द एरिया ऑफ ट्रायंगल. So that will be just a cross b. This is the proof for how to use this formula. And you all will go through this in maths, but there is no need for this as of now. You can see we are just required to use cross product and dot product efficiently. Now comes the homework part. So you all will do the homework section of 3.3 and 3.4. So in the next class, we will discuss the doubts from these 3.3 and 3.4. Okay, so let's meet in the next class. Let us discuss the doubts and let's play the Kahoot as well. Okay. All right, everyone. See you in the next class then.